Welcome back, guys. अब हम करेंगे work, power and energy. Question 5, paper 2, 5054. Let's start. Question 5. The foundation that supports the building are strong concrete cylinders that are pointed at one end, pointed at this end. Uh, Pile driver is a machine that forces the pointed concrete cylinder into the ground. It is the same as मतलब आप एक कील के ऊपर हथौड़ी मार रहे हो. So you'll get the same results as this. A heavy block of 2.9 into 10 raised to the power 4 kilograms is lifted into the air and then dropped onto the top of a concrete cylinder. इधर drop किया गया है. The forces this forces the cylinder to into the ground. ठीक है ना? तो yeah, आगे. The block is 2 meters tall and has a cross-sectional area of 1.2 meters square. Calculate the density of the material used to make the block. अच्छा ठीक है. उसने हमें दे दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दे दिया हमें उसने, ये वाला एरिया दे दिया. तो एरिया इनटू हाइट विल गिव अस वॉल्यूम बिकॉज बेस इनटू विड्थ इनटू हाइट विल गिव अस द वॉल्यूम. हमने बेस इनटू विड्थ, बेस ये है, विड्थ ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या 1.8. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से विल गेट द वॉल्यूम विच इज 3.6. ठीक है ना, मीटर क्यूब. समझ आ गई? तो या that is the volume, but we don't have to find the volume, we have to find the density. Density is equals to mass, which is 29,000, divided by volume, which is 3.6. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, what will we get? We'll get 8,000. What is the volume? लिख लेते हैं 8100 kilograms per meter cube. Exactly what I, not exactly, but that is the rounded off version. You have to round it off, right? तो मैंने जो आंसर दिया इट इज एक्यूरेट एंड ये इसको राउंड ऑफ कर दिया. The pile driver lifts the block from the top of a concrete cylinder through a height of 0.8 meters. They have given us the height, which is 0.8 meters. The gravitational field strength is 10 newtons per kilogram. Calculate the gravitational potential energy gained by the rock. अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें तीन कंपोनेंट चाहिए होते हैं, द मास, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मास, उसके बाद जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और उसके बाद हाइट. हाइट, मास और जी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी एम जी एच. मास कितना है? 29,000 kilograms. 29,000 into 10 into h, which is 0.8. We will get 232,000 joules, which will be rounded off to 30,000 joules. अगर हम इसको लिखें तो वी कैन राइट इट एज 2.3 into 10 raised to the power of 5. ठीक है ना? सो दैट इज द आंसर. एक बार चेक कर लेते हैं. सो या दैट इज द आंसर. The block is then dropped from rest onto the top of the concrete cylinder. Calculate the speed of the block just before it hits the concrete cylinder. अच्छा, बात सुने. अब आपको मैंने एक पिछले वीडियो में एक बात समझाई थी कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को हाइट पे पकड़ा हुआ है, अभी आपने इसको पकड़ा हुआ है, अभी आपने इसको छोड़ा नहीं है, ठीक है ना, अभी आपने फॉर एग्जांपल इसको पकड़ा हुआ है, यू हैवंट थ्रोन इट येट, ठीक है ना, अगर आपने पकड़ा हुआ है तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. लेकिन जब आप इसको छोड़ोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल टर्न इनटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता द ब्लॉक will have an increase in speed, और जब increase in speed होगी then the kinetic energy will increase, but when the speed is increasing the height is decreasing. So that is a very thorough explanation. तो अब हम कर लेते हैं. हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है.
and they have told us to calculate the speed of the block just before it hits the concrete cylinder. ठीक है ना? Just before it hits the concrete cylinder. It's not hit yet. ना ये इसके अंदर distance है. So 232,000 is equals to, अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर 29,000 थी एम इंटू वी स्क्वायर विल बी एज इट इज. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, टू 232,000 divided by 29,000 multiplied by 2, we'll get 16 is equals to v square. 16 is equals to v square. In order to remove that square, we'll have to under root the 16. So we'll get 4. V is equals to, oh, very easy question. आप इसको देख के जरा परेशान मत हो जाना. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो आपको मैं एक और दफा समझा देता हूँ. व्हेन द ब्लॉक इज हेल्ड एट अ हाइट, फॉर एग्जांपल आपने एक टेनिस बॉल लिया एंड यू हैव केप्ट इट हाई ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, लेट्स से बिल्डिंग पे रखा हुआ है, देन द बॉल विल हैव अ gravitational potential energy, and the gravitational potential energy is measured using the height, because gravitational force or mass do not change. The only thing which is changing is the height. Height is the variable. And when you drop it, अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक चीज को ड्रॉप करते हो, नीचे जाते 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 जितना ऊपर से ड्रॉप करेंगे उतना नीचे जाते तक स्पीड बिल्डअप हो जाएगी. सो स्पीड इज लिंक्ड टू द काइनेटिक एनर्जी. जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी कम हाइट होगी उतनी कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो दैट्स टू सम इट अप. So that is it for this video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Allah Hafiz.